हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एमबीए का सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक। इससे पहले की वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 101 क्या है। इसमें है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। Question number 102, TIC is headed by general manager in the rank of dash. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन 103, institutional agencies grant financial assistance to small scale industries for। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Question 104, under section 80J of the Income Tax Act 1961, small scale industries are exempted from payment of income tax on their profits at dash। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6% per annum। Question number 105, the policy which stressed the role of cottage and small scale industries for balanced industrial development of the country is option number B, IPR 1948। Question number 106, the policy which emphasized the need of promoting small scale industries through integrated industrial development is। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IPR 1977। Question 107, the small scale unit wishing to export has to obtain exporters code number from आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 108, the expenses incurred on the setting up of enterprise are called। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, cost of promotion। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, ओवर कैपिटलाइजेशन arises due to। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल अर्निंग्स आर लोअर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। क्वेश्चन नंबर 110, अंडर कैपिटलाइजेशन arises due to। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following leads to overcapitalization। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, acquiring fixed assets on excessive amounts। क्वेश्चन नंबर 112, which of the following leads to undercapitalization। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, underestimation of initial rate of earnings। क्वेश्चन नंबर 113, business means। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, industry and e-commerce। क्वेश्चन नंबर 114, a valid definition of a business purpose is to। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 115, a performance and credit rating scheme has been launched by the MSME ministry to assess the credit worthiness and capabilities of industries in the sector, what is called as। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, performance and credit rating scheme। क्वेश्चन नंबर 116, a public corporation means। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, statutory corporation। क्वेश्चन नंबर 117, promoter is a person who। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, takes part in the incorporation of a company। क्वेश्चन नंबर 118, the term capitalization is used in relation to। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, joint stock companies। क्वेश्चन नंबर 119, which of the following source is not used for medium term financing। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, that is issue of equities shares। Question number 120, which of the following security proves a burden on finances of the company when company is not earning profits। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, that is debentures। Question number 121, investment in which of the following is most risky। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, debentures। Question number 122, a project which may not add to the existing profits should be financed by। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, that is debentures। क्वेश्चन नंबर 123, बिजनेस रिस्क कैन बी डैश। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 124, अ कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी व्हिच एंटेल्स सेटिंग अप अ न्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी रिगार्डेड एज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंट्राप्रेन्योर। क्वेश्चन नंबर 125, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।